Alright, the next question says 24 years old seeking advice to make marriage better. Dear Junaid bhai, hope you're doing well. My name is ABC. I'm reaching out to you for guidance regarding my marriage. I got married to my cousin 8 months ago when I was 24 years old and she was 25. Before I explain my situation, I want to share some important details. Currently, I earn between 1.5 lakh to 2 lakh per month, but I haven't told my wife about my exact income. I only mentioned a minimum amount and she insists that I shouldn't give any money to my parents. This is because my father's business is in the Middle East, is going through a tough time, and he hasn't been able to send us some money. Right from the second day of our marriage, my wife started picking fights over small things. She questions why I care about my parents, why I talk politely to them and my siblings. हैं ये क्या मसला है कि उनसे तमीज़ से क्यों बात करते हो? Why I spend my time with them, and even when I took my mother to the doctor, these fights have been happening frequently and are straining our relationship. It's a fucking red flag. Around 1 week after our wedding, my wife started demanding a separate home, which is not wrong. She claims that my parents and siblings don't respect her. Okay, this is, I don't know, this is subjective. And that she doesn't feel valued in her current household. एक तो मुझे ये वैल्यू वाली चीज़ समझ नहीं आती कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मतलब सर पे बिठाएं, ताज पहनाएं, ताज पोशी करें, तख्त पे बैठें, क्या वैल्यू? However, this is not true because I work from home and know what's happening. Okay. Despite being good friends before we got married, I've often felt that my wife doesn't respect or like my side of the family. इसलिए कहते हैं फैमिली में करनी नहीं चाहिए भाई, बाहर जाके करो शादियाँ. Many family members and her parents have spoken to her about these issues, but she always blames me or my family for the fights. Again, red flag. To avoid the fights, I rented an office after 1 month of marriage. देखो फजूल का एक्सपेंस आ गया जिंदगी में, फजूल का. फाइटिंग अवॉइड करने के लिए ऑफिस ले लिया. ये होता है ना वो रात को जब आप फेज रेट पे गाड़ी चलाओ ना, व्हेन यू नो कि घर में लड़ाई वेट कर रही है. तो किसी ज़माने में मैं भी बहुत चलाता था कि यार घर जाके लड़ना ही है तो फिर बाहर थोड़ा और टाइम गुजार लें. तो बहुत सारे मेरे जैसे सिंगल, मतलब गाड़ी में एक बंदा बैठा है, उसका क्या काम है फेज रेट में गाड़ी लेने यार. यू गेट इट, अनलेस यू लिव एट द क्रीक. खैर, फजूल का एक्सपेंस है. मैं शादी के 1 महीने बाद लड़ाई से इतना तंग आ गया कि बंदे ने ऑफिस ले लिया. I hope that it would help. Unfortunately, the fights only increased over time. While my mother and other family members have no problems with her, she doesn't believe it. She just wants a separate home and wants me to cut off ties with my family. So what she wants to do is कि अलग घर हो ताकि उनके नाम भी हो, और फिर जो है इससे भी बात नहीं करो, इससे भी नहीं करो, इससे भी नहीं करो, इससे भी नहीं करो. कुछ लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो कहते हैं बस मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ. And it's a fucking red flag. Whenever she starts a fight, I try my best to avoid. I explain things to her and suggest activities that might make her feel better, like going out for a nice meal. We go out for dinner every few days. I also fulfill her wishes when it comes to food and things she wants to buy. But no matter what I do, she always blames me for not being a good husband. शादी के 1 महीने में तुम गुड हस्बैंड भी नहीं हो. She even, अच्छा शादी को टोटल टाइम कितना हुआ है? 8 months ago. 8 महीने में तुम हस्बैंड भी बुरे हो गए. Okay. No matter what I do, she blames me for not being a good husband. She even says that she made a mistake marrying me and that her parents made a mistake too, even though the marriage was her choice, not because of family pressure. If it's a mistake, then fucking quit it, man. I mean, let her go. During our fights, she gets physical and hits me or scratches me. Bro, what are you waiting for? बोतल सर पे मारे ताकि ICU में चले जाओ तुम. What are you waiting for? I always stay calm and don't retaliate because I'm afraid it will make things worse and she might use it against me. Absolutely. She wants more drama. There are people like that. Again, I don't know her. There are people, वो चाहते हैं कि कुछ सामने से आए and then वो फिर वो एक scratch को इतना बड़ा दिखाएं and then like use it against you. Yep. जॉनी डेप बन जाएं, रिकॉर्ड करें इन चीज़ों को, ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, सो दैट यू हैव सम प्रूफ. बिकॉज कल को अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, कुछ लोग होते हैं अपने आप को इंजर करके बोलते हैं देखो उसने मुझे मारा, एंड देन यू हैव नो प्रूफ. एंड globally, the law mostly sides with women. So yeah, I mean, like you need to have proof. To avoid arguments, I've stopped hugging my mother. Yaar, how this is extremely sad. Yaar, this is so sad. मतलब माँ को गले लगाने और मैंने टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया. यार माँ कितने अरसे इस दुनिया में.
अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, बट दे ऑल आर ऑन अ टेकिंग क्लॉक. वी ऑल आर ऑन अ टेकिंग क्लॉक, बट स्टेटिस्टिकली parents are there for a dude. You'll miss if you. Oh God. यार जो माँ से ही आप ना कर सको यार, that's fucking toxic man. Even a simple act like massaging her feet leads to drama and long fights that can last for hours regardless of the time of day. I'm in a lot of emotional pain and I don't know what to do. Sometimes we have short periods of calm where we're happy together, but the fights start again soon. So it's like जैसे कराची में अमन होता है, एक मर्डर से लेके दूसरे मर्डर तक का जो बीच का पीरियड है वो पीसफुल पीरियड होता है. वैसे इट्स सो फकिंग आयरॉनिक, आप कराची एयरपोर्ट से निकलो, जो पहला बोर्ड लगा हुआ है ना, कराची सिटी ऑफ पीस, उसके साथ 6 रेंजर्स की मोबाइल खड़ी होती हैं लोडेड विद G5 और G3 गन. इतने बड़े बड़े वेपन आपको नजर आते हैं, लाइक फकिंग रिडिकुलस. तो वो ही आपका जो काम पीरियड है ना, वो कराची के काम वाला है. बट द फाइट स्टार्ट अगेन सून आफ्टर. However, it's worth mentioning that we have a sexual relationship during these calm periods. We wanted to have a child. Don't have a child, bro. That's like the worst thing you'll do to yourself, your wife, and most importantly, the child. As she would say, I will. We wanted to have a child. As she would say, I will start giving her attention once I become a father, but didn't happen in the first 4 months. However, in the 5th month, she became pregnant. And the fight stopped for about 10 days. Well, wait till she goes in her 2nd or 3rd trimester, then you'll be unleashed to a lot more drama. And then postpartum तो कत्ल ही ना हो जाए तुम्हारा, अल्लाह ना करे. All these fights and unstable relationships are affecting my work. I can't concentrate on my task. देखो, this is what I fucking hate about Pakistanis. भाई पहले टाइम गुजारो, ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा लिव इन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विद द पर्सन. और ये मैं कह रहा हूँ जिसने दूसरी डेट पे शादी कर ली थी, तभी कह रहा हूँ. ओके, spend ample honor. You need to find a friend in your spouse. If you don't find a friend, and if you just find okay, oh, it's just a marriage of convenience, okay, I need to get married because all my friends are getting married, yeah, she needs to get married because umar na nikal jaye, that's not the reason. That shouldn't be the reason for you to get married. और फिर अच्छा अगर कर ली है तो then spend good amount of time, 2 साल 3 साल तो सोचो ही ना बचेगा. पहले अपनी कंपैटिबिलिटी देखो, क्या हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं. यू मे लव अ लॉट, यू मे लव ईच अदर अ लॉट, बट समटाइम्स लोग बर्दाश्त नहीं होते, राइट. यू मे लव अ पर्सन बट नॉट नेसेसरीली लाइक दैट पर्सन. इसमें बड़ा फ़र्क है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट इट्स ट्रू. It's absolutely true. You need to like her and she needs to like him as well. Love तो हो ही जाता है. आप बोलोगे यार लव कैसे हो रहा है जब लाइक नहीं हो रहा है, स्ट्रेंज केमिस्ट्री, बट इट हैपन्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज वंस यू रियलाइज कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन दैट आई कैन रेज माई फैमिली विद, ओनली देन. अभी यहाँ लड़ाइयाँ रुक नहीं रही. 10 दिन का वो 10 दिन में लड़ाई नहीं हुई, उसमें प्रेग्नेंट कर दिया. मतलब क्या सोचते हैं यार लोग. अब वो बच्चा आएगा इस दुनिया में, ठीक है, वो क्या देखेगा कि माँ के टांग दबाए तो यहाँ मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, राइट. फिर वो बच्चा ये सीखेगा कि माँ के टांग नहीं दबाने चाहिए क्योंकि मेरा बाप भी हर वक्त, मेरे बाप के सर पे बोतल लग गई थी इस वजह से कि माँ के टांग दबा रहा था, तो मैं भी जब बड़ा हूँगा तो अपनी माँ की टांगें नहीं दबाऊंगा. एंड देन लाइक you'll just raise a client for my therapist, perhaps. All these fights, I can't concentrate on my task or communicate well with my team. They're managing most of the work and I'm struggling to find new clients or run my agency effectively. I really need your advice on how to handle this situation and make my marriage stable. I would appreciate any suggestions or insight you can provide. Thank you for taking your time to read my email. अगर मेरी गवर्नमेंट होती और एक होता ना कि गवर्नमेंट को ईमेल भेजें कि ये हो रहा है, तो लाइक अबॉर्शन किया जाता. Because then, I mean, I don't know man. अब तो आपने प्रेग्नेंट भी कर लिया तो अब बैठे देखें क्या होता है. इट्स अ स्ट्रेट अप रेड फ्लैग एंड इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर. सो बेसिकली हमारे ना लोग इस चीज़ में रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या फैमिली है, मेरी कज़न है, फिर कुछ हो गया अगर लाइक इफ़ वी डोंट वर्क आउट, फिर दावतों में कैसे मिलेंगे. अरे कितनी दावतें होती हैं साल में, एक ईद 2 ईद होती हैं, कर लेना, सह लेना.
बट वो दुनिया के चक्कर में फिर वो मिजरेबल रहते हैं, पूरी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारते हैं। अब आप अपने घर में खुश नहीं हो, अपनी माँ को गले नहीं लगा सकते, अपनी माँ की टांगे नहीं, इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है। एंड क्लियरली योर पार्टनर इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक, उनका इलाज कराएं, बट शी वुड बी टू नार्सिसिस्टिक टू इवन कंसिडर थेरेपी, बिकॉज कुछ लोग होते हैं उनके लिए सब गलत होता है। सब जो पागल खाने में जो इंसान होता है ना, वो सबको पागल कहता है, वो ख़ुद को नहीं कहता। सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, उनके लिए नहीं कह रहा मैं, एक जनरल एक मिसाल दे रहा हूँ। मगर ये कि इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अब आपने प्रेग्नेंट भी कर दिया तो अब आप बैठ के मैच देखें, वेट करें। और जैसा कि मैंने कहा, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली, एंड फिर पोस्टपार्टम देर आर सम रियली न्यू काइंड ऑफ फाइट्स अवेटिंग यू। मैं डरा नहीं रहा, जो है वो है, फैक्ट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ और जो होता है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, आई कुड हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट और अब एक बच्चा इस इक्वेशन में आपने इन्वॉल्व कर दिया, जो कि एक पहले ही इतनी अनस्टेबल चीज़ थी। मतलब इट्स लाइक एक बिल्डिंग ऑलरेडी कभी वॉबली है ना, कभी वो इधर गिर रही है और कभी उधर गिर रही है, और फिर उस वॉबली बिल्डिंग में आप एक इन्फेंट 5वें फ्लोर पे रख देते हैं कि शायद अब ये बच जाए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सो अभी मैं अब कुछ नहीं कह सकता भाई। अब आप वेट करें, वॉच करें, मिरेकल का वेट करें। मे बी मदरहुड चेंजेस हर, बट देन फिर मदरहुड विल मेक हर मोर, उनकी एक मदरली फीलिंग्स भी जाग जाएंगी। ओ मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अब सेफ़ नहीं है इस एनवायरनमेंट में, तुम्हारी माँ नज़र लगाती है। फिर उस बच्चे को प्यार करने में लड़ाइयाँ होंगी कि माँ ने क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे दो, ये है वो है। डूड, काम के लोगों से शादी क्या करें यार, आप लोग क्या करते हो यार। प्लीज़ मैरी समवन विद सम सॉर्ट ऑफ हॉबीज़। ये ड्रामों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।